the glimpses of this extraordinary felicitation organized by different groups. Thank you very much. Dhiman bhai, there is no voice on video. Sorry for the technical difficulties. We tried our level best, but you know, the technical difficulties. There you go. भगवान महावीर के जीवन दर्शन एवं सिद्धांतों के देश विदेश के जनमानस में संस्थापित करने वाले प्रज्ञा प्रेम और पुरुषार्थ की साक्षात मूर्ति अडिग आस्था, अनूठा साहस, उदात्त संयम, अजस्र कर्म शक्ति, अथक परिश्रम के साथ माँ की ममता एवं वात्सल्य भाव से अहनिश जन जन के कल्याण में संलग्न आचार्य श्री चंद्र श्री जी को भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, अवार्ड व्यक्ति विशेष का नहीं, भगवान महावीर के सिद्धांतों का है। सेवा, शिक्षा, साधना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित है। તમે છો મારા, હું છું તમારો, તમે છો મારા. આ વાત તમને કહી દઉં છું.
इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जैन धर्म की विभिन्न धाराओं से मेरा कुछ विशेष जुड़ाव रहा है और जैन संतों का विशेष सानिध्य भी मुझे समय समय पर मिलता रहा। देवियों और सज्जनों, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में जैन साध्वी आचार्य श्री चंदना जी को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर भी मुझे मिला। चंदना जी आचार्य की उपाधि पाने वाली पहली जैन साध्वी है। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने बिहार, गुजरात, राजस्थान, नेपाल और कई अन्य स्थानों पर शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, जिनमें अब तक 2 लाख से अधिक बच्चे और युवा शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। Is it done? Yes. Oh, okay, great. Yeah. So before we move on to the next item, just a simple announcement that the couple of initial difficulties we had, Zoom were not working, more than 400 guests, but now that problem is resolved. You can request to your family members and the friends who try to join earlier, they can rejoin again. And YouTube is also working. Now, let's move on to the next item. And for the next item, we have our speakers, Shri Haresh Shah. He is the current JAINA president, and he is going to talk about the welcome notes. His simplicity and straightforwardness are amazing. His long association and vast experience of JAINA activity will take it to the greater heights. We request Haresh Bhai to take the stage and give the welcome address. Haresh Bhai. HonoringPujya to Taima and all the Sadhvigan and Sadhugan. HonoringPujya. Pranam Jai Jinendra to all the Shravaks and Shravikas present in North America, India, England, Middle East, and Far East.
I welcome you all for this memorable night. The relationship that Jaina and Virayatan has, it started out with first in the year 2001. Jaina supported and funded the academic school, Virayatan project in Lachwar, the birthplace of 24th Tirthankar Mahavir Swami. And in the same year, Jaina and Virayatan worked at the earthquake in Kutch. Other than that, this year, there is a new school project that is happening in the Rajgir in the state of Bihar. And that is also sponsored and funded by Jaina. One of the past Jaina president and Jaina Ratna awardee, Shri Lataben Chamsi, has pledged 1 million Canadian dollars towards this project. In the past, Jaina has carried out 6 NRI pilgrimage yatras to Sikharji, and during those yatra events, all the yatris had stayed at the Rajgir, the Virayatan Rajgir facility for almost 3 days. And this is the Jaina side. But then on the other hand, the Virayatan side, all the Sadhvijis are always featured at all Jaina conventions and all the other Jaina events. Jaina propagated the philosophy of Taima. Virayatan supported all the Jaina conventions and various activities. Large numbers of Jain residing in North America are influenced by Taima's teachings. On behalf of Jaina, I thank the entire team in coordination of this memorable event. They all have carried out this fantastic event by demonstrating dedication and volunteering countless hours of work. Thank you very much. Now, we move to the next agenda, and that is the speech by our loving President, Shri Abhay Firodia. Shri Abhay Firodia is a leading industrialist and President of Virayatan. I always remember that he always says that Virayatan is not an institution, but it is a concept. It is an experiment wherein Jain Sadhvijis, apart from the routine tradition of Jains, are engaged into the social activities. This particular family, Firodia family, is right from the inception of Virayatan, has been great support to the Virayatan and has, I will probably say, enormous contribution in the growth and the success of Virayatan. Abhay, please share your views on Taima. Thank you very much. Vandana to all the sadhus, sadhvis present, and all my brothers and sisters from the Jain community and other communities present today. It's a privilege for me to speak on this occasion of the felicitation of Sai Maharaj on being conferred the Padma Shri Award. Her glorious life is a path-breaking journey. The first sadhvi
ever to have been created Acharya. That in itself is a very great achievement and recognition. She has, through her life and the message that she has always given, she has fully justified this exalted title. Her attempt to refocus and redefine the understanding of the Jain community about how in the modern age our life, our actions, our values should be seen is a very special achievement of hers in her life. Compassion in action is the nice slogan that Veerayathan has adopted. But I must say that she has brought it alive. It is not, when you look at her life, just a slogan, but the way she has lived her life and the way she has guided the people that are around her. Sadhana, which is committing oneself to practice the Jain values. The very simple definition of sadhana, practice Jain values. Seva, that is service to the needy, to the ill. This is something which she has actively, as a sadhvi, led and participated in. And shiksha, that is focus on the value education part of the social work that she is doing. Her brave decision to go to Bihar, Rajgir, 50 years ago, to create an active, a vibrant, and a novel center for Jainism is indeed the stuff of legends. The future generations will remember her as deserving the name of Chandana of Bhagavan Mahavir's time. For what she has achieved in this life is extremely exalted. Her decision to create an eye hospital in Rajgir, Bihar, some 30 years ago, has today borne fruit. You would be pleased to know that it is probably the largest rural eye hospital in the world. This hospital has carried out 10 million, 1 crore surgeries. And this is amazing considering it is being carried out in Bihar, which is a very backward area. A lot of ophthalmologists and surgeons in the major cities of India have applauded this hospital as being one of the cleanest and best organized hospitals in India. So though it is in the rural area, it is her guidance, her insistence on quality that has made this hospital so extraordinary. Her unprecedented action of going personally to Kutch within days of that great calamity of earthquake and being involved directly in the relief work is unprecedented in the annals of Jain tradition. And she created there a very large, well-equipped and guided this institution to achieve the stature and the fame that it has. So her efforts turned what was a great tragedy into an opportunity to serve humanity, not just during the hour of need, but on an ongoing basis. Her support to the needy during the fearsome corona epidemic has been spectacular, having reached a few 100,000 people over several months to give medicine, to give food, even in remote areas of Bihar, is worth understanding and remembering
by all humanity. She is spearheading the creation of a modern diagnostic center in Bihar. Most of us probably are not aware that even in a large city like Rajgir, which must have a population of more than 100,000 people, there isn't even the facility of carrying out an X-ray for any ailment. And she has embarked upon setting up a modern diagnostic center equipped with the best equipment and telemedicine facilities so that the population around can be served properly. Her resolute approach to further value education, to reach thousands of schools in rural Eastern India, is a new initiative, and she has recently rolled it out. I believe, like her eye hospital and other efforts, this is going to have very far-reaching consequences. Above all, her compassionate, her controlled approach to lead committed sadhvis and shravaks to tread the path collectively to achieve the goals she has set is an act of great leadership. The organization Veerayathan was established by her in the land of Mahavir. She has ensured that Veerayathan has fulfilled her vision. As a member of Veerayathan, I am greatly privileged to have had the opportunity to participate in this journey. As an organization and as people involved in Veerayathan, we feel greatly blessed to have her love, her care, her guidance, and I can only pray on this occasion that we may continue to have her blessing and her guidance on and on. I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to give you a brief background of Veerayathan and to express our respect, our love, our commitment to Taima and to the work she is doing. Namaskar. Namo Jananam. Namo Jananam. Thank you, Abhay. Our next guest speaker is Suffolk County Executive, Mr. Steve Ballon, who is a popular and successful administrator. His contributions in development of his county is remarkable. It is commendable that the way he handles the two major calamities of his county, that is Superstorm Sandy and COVID-19 pandemic. To improve the county, he is focusing on technology, transportation, good water quality, and efficient waste management. He also attended Taima's program in 2019 at the consulate office in New York. We request Mr. Steve to say a few words. Thank you. Namaste. And it was one of the great privileges of my time in public office to attend that ceremony. I want to first thank the Federation of Jain Associations in North America, President Haresh Shah, and all of the officers and members of this extraordinary organization that does so much good for our community on this continent and around the world. I want to give a special thanks to my good friend Kanak Raj Golia and the Golia family, who helped facilitate this incredible opportunity for me to bring greetings from New York State's largest county, Suffolk. And I'm very pleased to be joining all of my friends across the region, the state, the country, and in India as well. And I bring greetings on behalf of the more than 1.5 million residents of Suffolk County and all New Yorkers. Probably a small number to some in India. As I've said many times, there is no more important relationship in the world today than that between the people of America and India. We must continue to maintain and strengthen the ties that bind us, because the success and health of the world will depend on it.
I'm very proud tonight to be joining with JAINA in honoring the founder of Viriatan and a recipient of the 2022 Padma Shri Award, Pujya Acharya, Dr. Shri Chandana. She's receiving from JAINA the Angel of Compassion Award. And that is so appropriate. In my faith, that is exactly how she would be regarded, as an angel. She has helped transform countless lives and has served as a beacon of hope for millions by helping those in need and alleviating human suffering. What is most moving to me and what is most pioneering about that work is the fact that it serves all of those in need, regardless of background or class, religion or nationality. In her service, she sees only humanity. We must all look towards that example, the example that she has set to make this world a better place for all of us. Congratulations again on behalf of the people of Suffolk and New York. And thank you again to JAINA for allowing me to participate in this important and inspirational program. Thank you, Mr. Belon. The next person on our list is Param Pujya Rakeshji. I'm supposed to introduce this great personality in few words, which is very difficult. Pujya Bapa is a pure and pristine soul. With his modest and immaculate speech, he has enlightened thousands of people. Today's youth are folks who believe in treats and technology. But those who follow Babaji have started believing in Tirthankaras and Tirtha. His influence on his follower is not only amazing but mystic. There are many people who read history. There are few people who write history. But there are rare people who create history. Bapaji is such a divine person. We are blessed to have his Vatsalya Bhav for Pujya Tai Ma. આજે સ્ટેજ પર જે વિભૂતિ છે એમને અહીં આમંત્રણ આપવામાં પાછળનું પ્રયોજન આપનો પ્રસંગ દીપાવવા માટે નથી, પરંતુ આપના રોલ મોડેલ તરીકે પ્રેરણા લેવા માટે અને આ આમંત્રણનો સ્વીકાર કરવા બદલ આચાર્ય શ્રી હું ખૂબ ખૂબ ઋણી છું. Leaders are the drivers of society. They drive the society in the right direction. એક બસ 50 માણસને લઈને જતી હોય, બસમાં કેટલાકને ઝોકું આવી જાય કે ઊંઘી જાય તો ચાલે, પણ બસ ડ્રાઈવરને એક ઝોકું આવે તો ન ચાલે. Because the leaders are the drivers of society, so passionately, so perfectly, and still so detached. So Google, one click, મોટાઓ માટે એક બટન દબાવો and many sites open. અનેક ગુણોનું સ્મરણ કરવું હોય તો એક નામ યાદ આવે, તાઈમા. I have not heard about her virtues. I have seen, I have experienced, felt it also. બીજા લોકો તો જ્યાં જાય ત્યાં વિઝિટિંગ કાર્ડ્સ આપે. અમને જો હું યુકેથી આવ્યો તો 15-20 કાર્ડ હતા
કોઈને કોઈને મળવાનું થાય તો બધા કાર્ડ આપે. તાઈમાં પણ એવું જ કરે છે. જ્યાં જાય ત્યાં વિઝન કાર્ડ આપતા જાય છે. કરુણા વહે ત્યારે યુ બીકમ સો સેન્સિટિવ. She lives not to survive, she lives only to serve. Her day is like a game of tennis. It starts by serving, and her day ends with love all. સૂર્ય ભલે અમેરિકામાં ઉગે, અમેરિકાનો થઈ જતો નથી. સૂર્ય ભલે ઇન્ડિયામાં ઉગે, ઇન્ડિયાનો થતો નથી. સૂર્ય ભલે વિરાયતનમાં ઉગે, એ વિરાયતનનું નથી. માત્ર વિરાયતનનું નથી, જીન શાસનનું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું છે. her contribution to Arya Sanskriti. Fantastic. કે વિરાયતની સ્થાપના રાજગીરમાં થઈ અને પછી તો અનેક સ્થળે થઈ. દેશ પરદેશમાં એક ગૌરવવંતું સ્થાન, નોટ કોન્ટ્રોવર્શિયલ પણ ગૌરવવંતું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. અને વળી આ પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ. And I totally agree with Nemiji કે કોણનું મૂલ્ય વધ્યું આ એવોર્ડ પછી. I totally agree with him. પુણ્ય વૈભવ તો ખરું, સાથે પ્રજ્ઞા વૈભવ પણ એવો છે. વન્ડરફુલ ઓરેટર. જ્ઞાન અને અભિવ્યક્તિ બંને એકદમ સ્પષ્ટ. સ્પષ્ટ એટલે વધુ સ્પષ્ટ. કોઈ ગભરાઈ જાય એટલું સ્પષ્ટ. જકડી રાખે એટલું સચોટ સઘન. જે સાધના કરી અને જે જ્ઞાનને પચાવ્યું, her convincing power is fantastic. She is wonderful in formation and transformation, both. પરમ કૃપાળુ દેવ પાસે હું એટલી પ્રાર્થના કરું, તાઈ માનું આયુ દીર્ઘ અને નિરામય હો, તેમના દ્વારા ઉત્તમોત્તમ કાર્ય થતા રહે. ઘણા ઘણા જીવોને મોક્ષ માર્ગમાં આરૂઢ થવાનું કારણ રૂપ બને અને અમારા પર સદૈવ આપના આશીષ રહે. ઓમ. Next Ashirvachan coming from Pujya Acharya Maniprabh Sagarji Maharaj Sahib. Pujya Acharya Maniprabh Sagarji Maharaj Sahib is a spiritual leader of the Khatargach Deravasi tradition. His core teachings of Jain Tirthankars have electrifying effects on the devotees. Blessed by his guru Acharya Jin Kanti Sagar Suriji, he constructed a unique temple in Madwad, Rajasthan. This temple is popularly known as Jahaj Mandir, a piece of magnificent art and the architecture made up of spotless white marble in the shape of a sheep. Taima contemplates him as one who upholds the unique tradition of Tirthankar Mahavir. We are pleased and blessed to have his compelling words for Taima. आदरणीय ताई महाराज आचार्य श्री चंदना जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से विभूषित करने का समाचार स्वाभाविक रूप से समाज के लिए, विशेष रूप से जैन समाज के लिए परम गौरव की अनुभूति का विषय है. हम
जब आचार्य चंदना जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हें पद्मश्री का यह विभूषण उन्हें बहुत पहले ही अर्पित किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण मानव सेवा को अर्पण किया है और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में, सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन सौंपा है, निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा दिया गया यह पद्मश्री पुरस्कार अपने आप में एक योग्य व्यक्ति को दिया गया योग्य पुरस्कार है। आचार्य श्री चंदना जी वो वात्सल्य, प्रेम, भक्ति, इन भावों से परिपूर्ण इनका जीवन है। हमने वर्षों से इनका परिचय जाना है। जब उपाध्याय श्री पूज्यपाद अमर मुनि जी महाराज जब राजगृह में विराजते थे और विलायतन की जब स्थापना की थी, उस समय में पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्रीमद जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब के साथ में पहली बार हमारा उधर जाना हुआ था और तब से उनके सद्भावों का परिचय हमें मिला था। अभी लगभग 6 वर्षों पूर्व जब राजगृह में पार्श्वनाथ परमात्मा के जिन मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर था, हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा और ये पाया कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन है, वो अपने आप में सद्गुणों का भंडार है। हम सभी उनको जो पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा अर्पण किया गया, इसकी अनुमोदना करते हैं और अपने अंतर में गौरव का अनुभव करते हैं। Next in the list is Param Pujya Shri Ravindra Muniji Maharaj Sahib. Upadhyay Shri Ravindra Muniji Maharaj Sahib is the ardent disciple of Acharya Samrat Pujya Shiv Muniji Maharaj Sahib. His contribution in Jain literature is significant. His vision about social and spiritual reforms according to the change of time is inspiring and innovative. We are pleased to invite Pujya Upadhyay Shri Ravindra Muniji to say a few words about Taima in 3 minutes time. अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आज की धर्म सभा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को सादर वंदन नमन। सबके सुख साता की परीक्षा करता हूं। आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है, जैना संस्था जिसने विदेश के अंदर जैन धर्म के लिए काफी काम किया है, उसके तत्वावधान में परम पूज्य पद्म श्री आचार्य श्री चंदना जी का पद्म श्री अवार्ड मिलने पर हार्दिक अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अनेक महान विभूतियां अपने अपने पावन विचार रख रही हैं। इसमें धार्मिक गुरु भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, धर्मनिष्ठ लोग भी हैं, सब अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। आचार्य श्री चंदना जी को जितना मैं जान पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आप बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली रही हैं और आपने होश संभालने के बाद लीक और परंपराओं से हटकर के काम करने का हिम्मत और साहस का कार्य किया है। आपके अंदर विचारों की दृढ़ता है, आचार की पवित्रता है और आपके जीवन को निखारने, संवारने, बनाने में परम पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज और राष्ट्र संत कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज जैसी महान विभूतियों का भी बड़ा अहम योगदान रहा है। आपने एक समय आने पर जहां ज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया, वहीं आपने सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय सेवा के काम करते हुए भगवान महावीर की परंपरा के जिन महान आचार्यों ने कहा
कि जन सेवा ही जिन सेवा है, जन सेवा ही जिन सेवा है, इसको आपने वास्तव में साकार करके दिखाया है, सार्थक करके दिखाया है। अभी भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो पद्म श्री का अवार्ड मिला है, इस अवार्ड के माध्यम से संपूर्ण जैन समाज, समस्त नारी जाति का एक तरह से सम्मान किया गया है। आपने अपने कार्यों के द्वारा इस बात को रेखांकित किया है कि जीवन में काम करने की लगन और साहस हो तो सब कुछ संभव है। आपने काम किसी अवार्ड के लिए नहीं करे, अवार्ड तो आपको सहज रूप से आपके कार्यों का मूल्यांकन करने के कारण प्राप्त हुआ है। मैं कामना करता हूं कि आपने पिछले 50 सालों में शिक्षा, सेवा, साधना, संस्कार की जो महान ज्योत जलाई है, ये महान ज्योत इसी प्रकार जलती रहे, चलती रहे और जिन शासन की प्रभावना सहित मानव जाति का कल्याण करती रहे। मैं आपके मंगल में स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत इसी प्रकार बनी रहे। और अंत में मैं अपने संघाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ और उसके 1350 साधु साध्वी की ओर से मैं आपके पद्म श्री अवार्ड की खुशी में बारंबार आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। The next person is a video by Acharya Samrat Dr. Shiv Muni Maharaj Sahab. Acharya Samrat Dr. Shiv Muni Ji Maharaj Sahab is the head of the Shravan Sangh, a pious soul whose inner piety and goodness gets reflected. You are muted. Yeah. I'm so sorry. The next one is Param Pujya Shri Ravindra Ji, Param Pujya Acharya Samrat Shri Shiv Muni Ji Maharaj Sahab. Acharya Samrat Dr. Shiv Muni Ji Maharaj Sahab is the head of Shravan Sangh. He is a pious soul whose inner piety and goodness gets reflected in the divine aura on his face. Detachment, austerity, enlightenment, and meditation are the 4 pillars of his pious life lived in equanimity. He is a PhD on the topics doctrine of liberation in Indian religion, with special reference to Jainism. Later on, he did it on concept and practices of meditation amongst Indian religion, especially Jainism. Millions of people have transferred their lives through his teachings of meditation. We are pleased to bring his approbative words for Taima. Vipin Bhai, you can. I request Shri Vipin Bhai Ji Shah, who is Vice President of Shri All India Stanakwasi Jain Conference. We request him to read the message of Acharya Samrat, Dr. Shiv Muni Ji Maharaj. महाविद्या क्षेत्र में विराजित अरिहंत परमात्मा श्री समंदर स्वामी जी के चरणों में शत वंदन। ध्यान योगी परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज के चरणों में शत वंदन। जैसा कि आदेश हुआ ताई माँ का, आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब अभी लाइव जूम पर नहीं आते हैं और न ही वह वीडियो संदेश दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पूज्य ताई माँ के लिए जो मंगल संदेश भेजा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब को भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इससे समग्र जैन समाज गौरवान्वित हुआ। उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि जी महाराज के सानिध्य में रहकर साध्वी जी ने साहित्य, समाज सेवा एवं धर्म प्रभावना के क्षेत्र में जैन धर्म को विश्व में फैलाया है। यह अभिनंदनीय है।
आचार्य श्री जी अपने जीवन का आने वाला समय समाज सेवा के साथ आत्मार्थ में व्यतीत करते हुए अपने चरम लक्ष्य सिद्धालय का मार्ग प्रशस्त करें। सह मंगल मैत्री। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, सूरत, गुजरात। Thank you, Today's Vipin ji. Our next guest today's speaker. Can I take 1 minute? Yes, please, Vipin ji. Please. Yeah, today's world needs the basic principles of Jain Dharma: love, compassion, friendship, non-violence, which has been practically done by Taima in rural areas of India, Africa, Nepal from last 50 years. She is spreading Lord Mahavir's compassion by serving peoples without any sex, caste, color discriminations, by erasing the distinctions of Jains and non-Jains. इस अल्प काल में मेरे को आचार्य श्री ताई माँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। उन्होंने एक सूत्र दिया, मुस्कान से मोक्ष। आज इस संसार में जहाँ भूखमरी, घृणा और द्वेष का राज्य है, वहां पे आपने कहा कि मैं किसी को भी ये नहीं कहती कि आप कठिन तप करो, साधना करो, उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त करो। आप सिर्फ प्यार बांटें और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जब आपका परिवार और समाज खुश रहेगा, तभी आप विश्व में शांति ला पाएंगे और उस शांति के द्वारा ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। यह ताई माँ ने हमें एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। और ताई माँ ने एक बात और कही जो कि आज पूरे विश्व में यूक्रेन और रूस के युद्ध के संबंध में चल रही है कि कोई भी शस्त्र नहीं, प्रेम ही का शास्त्रीय विकल्प है। नो वेपन्स ओनली, लव इज द सॉल्यूशन ऑफ वॉर, and we are the non-violence peoples are more and more than the violent people, so we have to raise our voice against this war and say stop. So ताई माँ जो इस तरीके से समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं, उनके बारे में मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है मैं ताई माँ का गुणगान या बखान कर सकूं। ताई माँ के बारे में तो कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा, रोते हैं बहुत पर दामन हमारा नम नहीं होता, आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। जय जिनेंद्र। मैं श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, अपने परिवार श्री आनंद प्रकाश जैन परिवार की तरफ से जैना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस वेब मीटिंग का आयोजन किया और ताई माँ को अभिनंदित किया, सम्मानित किया। जय जिनेंद्र, जय महावीर। Thank you, Vipin ji. Our next guest speaker is Shri Ranadhir Jaiswal ji, who is the Consulate General of India and a diplomat. He joined the Indian Foreign Services in 1998. He served in Portugal, Cuba, South Africa, and Permanent Mission of India, New York. He is deeply interested in strategic, sustainable development and public policy issues. He is originally from Bihar, near Rajgir, and is associated with Pujya Tai. We request Shri Jaiswal ji to say a few words in 4 minutes. Jaiswal ji. Ranadhir Jaiswal ji, are you on Zoom? Probably not. I think maybe. I think we should move to the other next person. Makes sense. Okay. So that concludes our segment 1, and now we're moving to the segment 2. The good news is we are almost on time, so we would like to maintain the same. Once again, Mathain Mandami Sadhvi Shri Sangamitra ji, we request you to recite Soulful Bhajan.
थैंक यू। सभी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। मैंने सोचा मैं भजन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं। जब भी कोई बंजर धरती नजर आपको आती हो, लेकर अपनी करुणा की बूंदे आप वहां आ जाती हो। सूखी वीरान धरा पर अपने प्रेम का हल चलाती हो, उत्साह लिए नव उत्पत्ति के बीज धरा में बोती हो। बनकर बदरी बरसती हो, उल्लास नया जगाती हो, करुणा की एंजल हो ताई माँ। अमृत देकर हर जीवन को उपवन बनकर महकाती हो, करुणा की एंजल हो ताई माँ। मुस्कान भरी वाणी मधुरी, आनंद दीप आंखें प्यारी, मूरत हो ममता समता की, तीरथ हो तुम मानवता की। हर सोच नई सत्कर्म नया, खुशियां है नई हर दिन है नया, उत्साह नया आह्वान नया, संकल्प नया अभियान नया। जिन शासन को चमकाया है, इतिहास नया रचाया है, करुणा की एंजल हो तुम अमर। अमृत देकर हर जीवन में विश्वास नया जगाया है, करुणा की एंजल हो ताई माँ। जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय, रक्षा तीर्थ की करना है, मुस्कान से मोक्ष को पाना है, यह मंत्र सदा अपनाना है। जिन शासन की गौरव गरिमा को आपने शिखर लगाया है, इतिहास नया रचाया है, जीवन को धन्य बनाया है। हाँ, हाथों में हो हाथ तेरा, जन्मों तक हो साथ तेरा, करुणा की एंजल हो ताई माँ। धरती अभिनंदन करती है, हम सब अभिवंदन करते हैं, करुणा की एंजल हो ताई माँ। जब भी कोई बंजर धरती नजर आपको आती हो, लेकर अपनी करुणा की बूंदे आप पहुंच ही जाती हो। सूखी वीरान धरा पर अपने प्रेम का हल चलाती हो, उत्साह लिए नव उत्पत्ति के बीज धरा में बोती हो। बदरी बनकर बरसती हो, उल्लास नया जगाती हो, करुणा की एंजल हो ताई माँ। अमृत देकर हर जीवन को उपवन बनकर महकाते हो, करुणा की एंजल हो ताई माँ। करुणा की एंजल हो ताई माँ। थैंक यू। Jai Jinendra. Now, next speaker, Sadharmic speaker is Shri Pramoda Ben Chitrabhanuji. Shri Pramoda Ben Chitrabhanuji is a spiritual leader. Her family from Kolkata is associated with Virayatan since its beginning. Pramoda Ben has supported various Virayatan projects. She is vegan. She is associated with Vegetarian Society of India and is president of
Jain Meditation International Center, we request Shri Pramoda Ben to say a few words. Jai Jinendra, it is a great joy and honor for me to be part of this felicitation and celebration event held by JAINA. We are celebrating the journey of Pujya Acharya Shri Taima for receiving such a prestigious award of Padma Shri 2022 by Government of India. It is a great pride for the Jain community at large and for women like us to know of a personality who has dedicated her entire life for the well-being of living beings. She empowers us to be dynamic and bold, kind and compassionate. To describe her, words fall short, and we cannot encompass the whole character of this great personality. But I would like to just say, and I'm reminded of a shloka by Acharya Midgati that really and aptly describes who Taima is. Satveshu maitrim, gunishu pramodam, klisteshu jiveshu krupa paratvam, madhyastha bhavo viparita vrutto, sada mamatma vidadhatu devaha. An aspirant is praying to Lord and asking for 4 things in his life or her life: to be present always. Let me have amity towards all living beings, eye of appreciation for the virtuous people, compassionate heart towards suffering life, and equanimity for those who do not walk on the right path. I think Taima has all these 4 beautiful qualities of the soul. She is an epitome of amity, appreciation, compassion, and equanimity. These qualities are incorporated and woven in her life through her mission of seva, siksha, and sadhana. We are all fortunate to have such a luminary amongst us and be part of this celebration and to honor such a great soul. It is our great fortune. I bow down my head to Taima and all the great saints and nuns that are present in the audience, and my namaskar to all the people who are attending this celebration, and hope we are empowered and inspired by this great woman who has dedicated her whole life towards the upliftment of those who are suffering and those who are underprivileged. Thank you so much, Taima, for bestowing blessings and love on me. And I always respect and bow down my head to you. Jai Jinendra and Namaste. Thank you, Pramoda Ben. Our next speaker is Srimati Lataben Champasi. Srimati Lataben Champasi is the past president of JAINA and Dean of Jains of Canada. She is the recipient of prestigious JAINA Ratna Award. She recently placed a significant contribution for the upcoming of JAINA Virayatan School at Rajkir. We request Shri Rataji to say a few words about Taima. Please unmute Lataji, we Unmute can't hear yourself, you. Lataji.
Jai Jinendra. Jai Janendra. It is my honor to be part of this program to felicitation of Jaina of Taima. Matyan Mandami Taima, Matyan Mandami, all the sadhujis, sadhvijis are present on the dais. I, Lata Chamsi, represent the Jains of not only Toronto, but the Canada. And we are very proud and honored to be part of this function. And we are very proud. The community is very proud and congratulating the Taima for receiving the Padma Shri Award. I am inspired by her philosophy of seva. Seva is spirituality. That is what Acharya believes. And that is something has always touched a note in my soul. Acharya going to Rajgiri 50 years ago and serving the humanity which don't get service by others has touched my heart. So when the school project came about, I thought there is no better way to help to further her cause by helping if I can donate this. My role is very insignificant compared to what Acharya is going and her other sadhvijis are going to do there. I'm very proud to be part of it and honored to be part of it. So she has inspired me to do this, and I'm really happy to do this. Thank you. Thank you, Lataji. Our next speaker is Shri Dilip Bhai Shah. Shri Dilip Bhai Shah is the past president of JAINA, again recipient of prestigious JAINA Ratna Award. Due to his seniority and vast experience with JAINA, people call him Bhishma Pitama of JAINA. He's playing a significant role in coordinating JAINA and Virayatan projects for many, many years. Welcome, Dilip Bhai. I just would like to mention that I had not to play the beep anytime. That's the discipline which all speakers have done. Thank you very much. Pranam Taima. Taima is an embodiment of Virayatan's slogan, compassion in action. Angel of Compassion Award to Taima is indeed a proud moment for Jaina. Taima's challenge to Jain Samaj, Jahan Jinalaya, Wahan Vidyalaya, is a multifaceted vision of Tirtha Raksha, upliftment of the town and people of the town where our Tirth is, will be remembered for generations to come. We are indeed indebted to Taima for her vision, her leadership, and her service. Thank you. Thank you very much, Dilip Bhai. Our next speaker is supposed to be Suresh Mota, but he's going to take 2 or 3 minutes more. So, Dimen Bhai, we will go for the next one, that is Param Pujya Morari Bapu. Pujya Morari Bapu is a renowned expounder of Ramcharitmanas. His amazing style of reciting Ram Katha all over the globe has taught truth, love, compassion, and peace to the thousands of his devotees. His oratory is fluent, eloquent, mighty, charming, and magical. For Taima, he always calls Atma Priya Bapu. We are pleased to have his vibes for Pujya Taima. Shri Ramachandram Sharanam Prapadye Shri Ramadutam Sharanam Prapadye. पूजनिया माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और आपकी
सेवा साधना की चेतना से ओतप्रोत श्रावक श्राविकागण दुनिया भर में आपके चरणों में निष्ठा रखने वाले हजारों भाई बहन, सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आपके नाम से मैं परिचित था, लेकिन जब विरायतन में 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ, बड़ौदा के हमारे परम स्नेही राजू भाई दोषी और राजू भाई के परिवारजनों ने आपके वहाँ भगवान माही स्वामी की तपोभूमि में 9 दिवसीय राम कथा का अनुष्ठान का आयोजन करवाया। उसमें आप निमित्त बने। उसी समय से प्रत्यक्ष आपका स्नेह और वात्सल्य का गहरा अनुभव हुआ। हमारे यहाँ सूत्र है कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सबके लिए हमारी सनातन परंपरा की विविध धाराओं ने अपनी अपनी आशीर्वादक शुभकामना प्रस्तुत की है, लेकिन हम सर्वजन और तक ही क्यों सीमित रहे। भगवान महावीर स्वामी की करुणा, अहिंसा, तपस्या और जीव दया, उसने तो समूचे विश्व को प्रभावित और प्रकाशित किया है। इसी धारा में आप भी केवल सर्वजन सुखाय नहीं, परंतु सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत हिताय और सर्वभूत प्रीताय जो आप कर रहे हैं और प्रेरित करते हैं सबको, वो बहुत विशाल है, विस्तृत है। इन सभी सेवाओं का स्मरण करके भारत सरकार ने आपके चरणों में राष्ट्रीय अवार्ड पद्मश्री समर्पित करके आपकी वंदना की। हम सब के लिए कितने आनंद की बात है ये। आप तो विरक्ति में जीते हैं, फिर भी आपकी ममता ने सबको भिगोया है और अनेक क्षेत्रों में आपकी सेवा चल रही है, चाहे विद्या हो, शिक्षा हो, आरोग्य हो, जीव दया हो, तपस्या हो, साधना हो। खबर नहीं किन किन क्षेत्रों में आपके आशीर्वाद ने बहुमूल्य काम किया है। आपकी वंदना करने के लिए आपके चरणों में निष्ठा रखने वाले और आपके सेवा कार्य से जो परिचित है, सब आपके चरणों में मिल करके वंदना करना चाहते हैं। मैं भी मेरे इन शब्दों से आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। आपका सहज और सरल स्वभाव और पीड़ित मानव जाति को देखकर आपकी सजल आंखें, इस सबको
बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सबने ये कार्य सोचा और आपकी वंदना हो रही है। तब मैं तलगाजरड़ा मेरे गांव में एक कोने में बैठकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। माँ, आपको पुनः मेरा प्रणाम और आपके आशीर्वादक छांव हमें बहुत दीर्घकाल तक प्राप्त होती रहे, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक प्रार्थना करता हूँ। पुनः एक बार प्रणाम। सबको मेरा जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद बापू। ऐसा लग रहा है आपको सुनते ही रहे। राम कथा तो चल रही है, लेकिन ताई कथा भी इतनी अच्छी चल रही है। Our next speaker is Shri Suresh Mutta. Suresh Mutta is the president of JITO, one of the most vibrant and significant Jain organization. He is one of the leading entrepreneur of India based in Chennai. Under his leadership, JITO has grown bounds and leaps. We request Shri Suresh Mutta to express his feeling on behalf of JITO to Taima. Thank you, Suresh ji. थैंक यू। श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटिश कोटिश वंदना। सुधर्मा स्वामी पाठ पर विराजित आचार्य श्री चंदना श्री जी, ताइमा, और इस प्रोग्राम में उपस्थित सारे पूजनीय वंदनीय आचार्य भगवान और अलग अलग देश के कोने से पधारे हुए सब महानुभावों को मैं जीतो की तरफ से सादर जय जिनेंद्र करता हूं। सबसे पहले बहुत ही खुशी की बात है कि जैना ऑर्गेनाइजेशन आज ताई माँ को के पद्मश्री की उपाधि जो मिली है, उसकी जो फेलिसिटेशन सेरेमनी में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं जीतो की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। ताई माँ को मिलने का मौका मुझे इन्हीं कुछ दिनों के अंदर काफी मिला। बेंगलोर के अंदर मिलने का मौका हुआ, कलकत्ता में हुआ, उसके पहले बॉम्बे में हुआ। और ताई माँ जो सेवा समाज के लिए, मानव सेवा के लिए जो कल्याण का काम कर रही हैं, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वैसे तो जैसे जीतो के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेवा, शिक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता, जो ताइमा कर रही हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सेवा, शिक्षा और उन्होंने साधना जोड़ा है। और ये साधना जो है वो ही अपने जीवन का एक अमूल्य अंग है और हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तभी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी, तभी अपनी सेवा हो पाएगी, तभी अपनी शिक्षा हो पाएगी। तो आप जो आचार्य चंदना श्री जी जो और उनके सारी साध्वी जी मिलकर के जो ग्रुप काम कर रही हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। हमको हमेशा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता है। और जीतो के साथ भी मिलकर के काफी बातें चल रही हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करें। तो we really look forward to associating with, as a JITO organization, we have today about 67 chapters across the country, 23 chapters outside of the country, and a strong family of more than 50,000 members, which includes the youth and the ladies. And we are always available at the service of Acharya Chandana Shri ji and her team for whatever that we can do to enhance the livelihood of people, and wherever we can be a part of the seva that you are doing. So I would like to once again congratulate Acharya Chandana Shri ji for this huge title that has been conferred on her, and would like to
just request her to give Jito any direction that we could leverage the strength of the network of Jito for the cause of humanity. Thank you very much. Thank you, Suresh ji. Thank you very much. You're so busy, but you took a time out. Next one in our list is Param Pujya Bhai Shri. Param Pujya Bhai Shri is an enlightened master and a spiritual head of Sri Raj Subhog Satsang Mandal. His gentle voice, which contains the most profound essence of spiritual wisdom, never fails to resonate with the keen listeners. Taima is deeply impressed with his simplicity and humility. We are pleased to share his warmth for Pujya Taima. ओम। भगवान महावीर को प्रणाम करके प्रेम, करुणा और दया की सजीवन मूर्ति परम पूज्य आचार्य चंदना जी को मेरी वंदना। पद्मश्री से सम्मानित होकर आपने पूरे जैन समाज का गौरव बढ़ाया है। आप इस सम्मान के पूर्णतः अधिकारी हो। श्री राजसौभाग आश्रम साइला के सभी मुमुक्षुओं की ओर से मैं आपको अनेक बधाई दे रहा हूँ। सेवा भाव और दृढ़ संकल्प शक्ति से आपने कई दुखी और दरिद्र लोगों को संभाला है। आपके हृदय में जो प्रेम है वह मनुष्य के मन के और शरीर के घाव को भर देता है। विशाल सोच और आधुनिक दृष्टि से जो आप कार्य कर रही है वह देख आज सारी दुनिया प्रसन्न और प्रेरित हो रही है। पृथ्वी पर के जीवात्माओं के लिए आप आशीर्वाद हो। विविध प्रतिभाओं से पूर्ण आपका दिव्य व्यक्तित्व देख के मैं अधिक प्रभावित हुआ हूँ। कला और कौशल्य, व्यवस्था शक्ति, गहरी सोच और दूरंदेशी से विरायतन और देश प्रदेश में जिस तरह मानवता का मंदिरों की आपने स्थापना की और अन्य साध्वी जीवों को आपने तैयार किया है, ये सब आपके प्रति अति पूजनीय भाव जगाता है। दर्शन शास्त्रों की गहराइयों को पाकर आपने जैन दर्शन को सही मायने में समाज के बीच रखकर रूढ़िचुस्त मान्यताओं को तोड़ एक नई क्रांति सर्जी है। केवल आत्मा को मुख्य रख के समाज में प्रचलित भेदभावों को आपने दूर करने की उत्तम कोशिश की है। जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय और चिकित्सालय द्वारा आपने शिक्षण, संस्कृति, धर्म संस्कार और आरोग्य का उत्तम समन्वय कर समाज में एक आदर्श मिसाल कायम की है। आपको जानने का, समझने का और आपका प्रेम एवं आशीर्वाद पाकर हम सभी धन्य हुए हैं। ईश्वर आपको दीर्घ सुखाकारी और साधनामय जीवन प्रदान करे, ये प्रार्थना है। मेरे मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सुअवसर दिया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री। आपकी इस भाषा से, इस वक्तव्य से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट पर्सन इन दी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सैकड़ों लोग आज जुड़े हुए हैं, और दूसरी चीज कहना चाहता हूं, जब स्पीकर्स को जो 2 या 3 मिनट का टाइम दिया है, सब में उस टाइम के अंदर अपना वक्तव्य संपूर्ण किया है, तो मुझे लगता है कि हमारा कार्यक्रम जो है वो सही समय पे समाप्त भी हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। As I told you, next person is Acharya Shri Lokesh Muni Ji Maharaj Sahab. Pujya Acharya Shri Ji Lokesh Muni Ji Maharaj Sahab is the founder, president of Ahimsa Vishwa Bharati. Acharya is a versatile thinker, creative writer, poet, and social reformer. He has traveled extensively, not only India, but all over the globe to promote peace, harmony, and non-violence. His current project is to build world first peace center in India. We request Param Pujya Acharya, Sri Lokesh Ji Muni Ji, to say few words for Taima.
बूंदे लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। धन्यवाद धन्यवाद। जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो आचार्य चंदना जी की तरह मरण का नहीं मुक्ति का द्वार खोल दे। सचमुच में हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि पूज्य आचार्य श्री चंदना जी को भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। हालांकि मेरा यह मानना है कि इससे पुरस्कार स्वयं सम्मानित हुआ है। आचार्य चंदना जी ने जिस तरह से निष्काम भाव से भगवान महावीर की शिक्षाओं के अनुरूप, भगवान महावीर कहते हैं कि जो रोगी, बाल, ग्लान और शख्स की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। उन्होंने जिस निष्काम भाव से सेवा की है, सचमुच में वो भारत रत्न की हकदार है। इससे पद्म श्री पुरस्कार स्वयं सम्मानित हुआ है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, केवल अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, अपनी ओर से यही मंगल कामना करता हूं कि आप इसी तरह दीर्घायु हो, शतायु हो और स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए मानव जाति की सेवा करते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, आपने सही फरमाया, जो गिलानम पड़ियरी सो मम्मम पड़ियरी। The next speaker in line is Shri Mahesh Bhai Vadir. Shri Mahesh Bhai Vadir is an immediate past president of JAINA and the member of BOD of JAINA. Under his leadership in last 3 years, JAINA has scaled up not only in its local activities, but the global activities. We invite Shri Mahesh Bhai Vadir to say a few words about Taima. You are unmute. Okay. Please unmute yourself. Thank you. प्रणाम जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री चन्ना जी का चरणों में कोटि कोटि वंदन। मध्याह्न वंदामि to all sadhus and sadhvijis. What can I say about Taima that has not already been told? I am inspired by her love of humanity, her devotion to just causes and taking Jain traditions forward through action. Specifically, her compassion through action is incredibly powerful. I have been fueled by her action to bring sight to so many of those less fortunate in India. In reading about the eye camps and hospitals providing much needed eye surgeries to thousands of people, this has motivated me to help the underprivileged in the health camps in my own community. To see the difference in people's health is the ultimate satisfaction. I admire her motto that the obstacles are milestones. There is no problem that cannot be solved. I have seen many of our Jain friends, including myself, using this belief in our own life, be that in the business world or in philanthropic endeavors. I have seen the transformation that education can bring to people and communities. Again, I have been deeply inspired by Acharya Shri's emphasis on education. She has been quoted as saying, while there are many temples in a village, why not turn the entire village into a temple by building a school? I have witnessed the entire community being elevated through education. Taima, your ambitions are infectious, and I am sure they will keep inspiring us for a long time to come. Our heartfelt congratulations on your receiving the prestigious Padma Shri Award. Thank you. Jainam Jaiti Shasanam. So nice of you, Mahesh Bhai.
The great phase obstacles are milestone, really wonderful. Our next speaker is Shri Prembai Jain. Shri Prembai Jain is the past president of JAINA. He is the founder and chairman of Jito USA and founding member of JCNC. He is the recipient of, again, prestigious JAINA Ratna Award. We request Prembai to express his feelings for Taima. Jai Jinendra, everybody. On behalf of the Jain community in North America and Jito USA, huge congratulations to our beloved Acharya Shri Chandana ji, Maharaj, on being bestowed with the prestigious Padma Shri Award. The meaning of that is really a noble one in blossom, which is really fit very nicely for Acharya Shri Chandana ji for her social work throughout her life. We all bow to Taima. This is the first time in the Indian history since the inception of the Padma Shri Award in 1954 that it has been given to a Jain nun for doing seva, service to the humanity. Wow. Next, as a global Jain community, I would like to request all the leaders who are present here. We all need to submit nomination for Acharya Shri Chandana ji for the Nobel Peace Prize for her humanitarian service, help with education for the needy, and spiritual upliftment for everyone. Today, JAINA is also giving her first time the Angel of Compassion Award to our spiritual leader of Compassion in Action, Acharya Shri Chandana ji, for her many achievements. And some of them, she has done so many things first time. And let me tell you a few of them. Founder of Virayatan, first Sadhviji to receive the Acharya in 1987. She is the first Sadhviji to travel outside India in late 80s and attended many Jaina conventions, and the first one in 1991 at Stanford. She is the first Jain Acharya to receive Presidential Award of Jaina also in 2007 for spreading the work of Bhagwan Mahavir. She is the first Acharya to perform Badi Diksha of Sadhvi Sangh Mitra ji in USA at JCNC in 2012. Congratulations on your outstanding achievement and winning this prestigious award, Acharya Shri ji. You deserve every bit of it, and you have made the entire Jain community in the world very proud. Let us go for Nobel Peace Prize for Chandana ji. Jai Jinendra. Thank you, Prembai. As the name goes, obviously your speech was with all love and true Jain. The next in the line is Shri Jainesh Bhai Mehta. Shri Jainesh Bhai Mehta of Texas is a member of BOD of JAINA and member of Board of Trustees of Virayatan International. And his contribution for JAINA, his contribution for Virayatan in USA is enormous. I request Shri Jainesh Bhai to say a few words. Pranam Taima and all the Sadhvi Sangh here, and also my namaskar to all the attendees. I'll begin with revealing a little secret inside Virayatan. Many of you probably know the story of Gautam Buddha and how his father, for many years, kept him isolated from the world so that he would not see any suffering. At many times we feel like we wish we could do the same to Taima and keep her isolated, because we know that as soon as Acharya Shri walks out and sees any kind of suffering, her compassion is instantly driven to action. Compassion in action is not just a logo for Virayatan. It describes every microsecond of Acharya Shri's life. And what does this mean to all the Sadhvijis and the Shravaks at Virayatan? It means a new project is born. And an instant scramble has to start on how to put this compassion in action. This is what the joy of being with Acharya Shri and working with her every day is. I've been fortunate to work both for Virayatan and for JAINA for more than a decade. And I'm really, really proud of JAINA's relationship with Virayatan. I would actually urge JAINA leadership to continue to find more ways
and bring more of Taima's projects to reality. She has already walked a unique path that has earned her and Jain's recognition at the highest levels of Indian government, as this award indicates. But just like Premji said, I think she can show us a path where the same thing can happen, the same recognition of Jains and Jainism can occur all over the world. Jaina and all associated with Jaina can certainly help achieve this vision. Thank you very much. Pranam. Thank you, Jainesh Bhai. We had Mahesh and Jainesh, and now we have Mukesh. Mukesh Bhai Turakia of Texas. Mukesh Bhai is the epitome and icon of Virayatan as far as US is concerned. He is the president of Virayatan International, and we request Mukesh Bhai to express his words for a Taima. पूज्य ताइमा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मथेन वंदामी टू साध्वी संघ। जय जिनेन्द्र टू साधर्मिक brother and sister. Taima, heartiest congratulations for the prestigious Padma Shri Award. We heard a lot of dignitaries describing Taima's qualities. I will put it very simply. Taima is unique. As we have one sun, one moon, and one universe, we have only one Taima. On behalf of Pujya Taima and Virayatan International, I would like to congratulate Jaina for an outstanding job in promoting Jainism and for unifying all Jain associations of North America and Canada under one umbrella. A special thanks goes to Shri Haresh Bhai Shah, Jaina President and Jaina Executive Committee, for arranging today's incredible program, as well as for honoring Pujya Taima with the Angel of Compassion Award. When I spoke with Taima earlier today, she expressed to me her excitement for today's special Jaina program, describing it as a pinnacle recognition of her compassion and Kalyan Bhavna. Taima also asked me to announce that she will likely no longer attend any additional Padma Shri related programs, marking this program as a climax and making it such a sacred. Lastly, on a more personal note regarding Taima, her accessibility makes her so unique as a saint, as we are able to directly feel and benefit from the positive energy she animates. Even if she may not be with us physically in Houston at all times, my family and I always feel her presence and blessing. Taima's role in my life has not only been as my guru, but also as a mother figure. I am so grateful to have her as our pillar of strength. May her light continue to shine on all of us for a long, long time. Jai Jinendra, Jai Hind. Thank you, Mukesh Bhai. The next one is Punita Ben Shah. Punita Ben Shah is the Vice President of Virayatan International. I've been seeing her working for Virayatan since last 30 years, relentlessly and continuously. As Mahesh Bhai has rightly said, love of Taima is contagious and mission of Taima is infectious. And Punita Ben is really infected with that. Thank you very much, Punita. Jai Jinendra, Koti Koti Vandan to Pujya Taima, Sadhvi Samudai, and all the respected dignitaries and Jaina leaders. There are stars, and there are many shining stars, but there is only one North Star. And our Pujya Taima is that one North Star who has given
a new horizon, a novel direction, and a unique identity for Jainism. Today, countless organizations have come together to convey their respect and reverence with various honors and accolades. However, this endorsement, this title, Angel of Compassion, really and truly encompasses and encapsulates Pujya Taima's timeless service and tireless dedication to humanity over the past half a century. With these few words, I would like to request each and all of you to join your hearts and your hands with Virayatan to further propel Pujya Taima's vision and mission. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you. Thank you, Punita Ben. You are my big sister. Thank you. Okay, next, our Sadharmic guest speaker is Shri Swapnilji Kothari, who is a teacher by heart, an entrepreneur by choice, and a leader by destiny. He is a chancellor of Renaissance University, Indore, India. Renaissance University awarded PhD doctorate degree to Pujya Taima. We request Shri Swapnilji to say a few words. Swapnilji. थैंक यू बाफना जी। जीवन ताइमा के चरणों में शत नमन। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जीवन का एक बड़ा हिस्सा जी लेने के बाद मनुष्य को यह समझ में आता है कि कष्ट और दुख एक चीज नहीं है। इन शब्दों का अर्थ अलग है। कष्ट भौतिक होते हैं और दुख मानसिक होते हैं। सुख जुटाकर कष्ट तो दूर किए जा सकते हैं, लेकिन दुखों को दूर करने के लिए धर्म का सानिध्य लेना होता है, और धर्म देता है स्पष्टता, क्लैरिटी, और स्पष्टता से ही दुख दूर हो सकते हैं। ताइमा यही सिखाती है और उनका जीवन इसी बात का संदेश है। ताइमा के नेतृत्व में नेत्र चिकित्सकों ने तो बहुत सारे नेत्रों की शल्य क्रिया की है, लेकिन ताइमा स्वयं दृष्टिकोण की शल्य चिकित्सा करती है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास का प्रशिक्षण दिया गया बहुत वर्षों तक, लेकिन ताइमा ये सिखाती है कि धर्म तो विचार करना सिखाता है, क्योंकि विचार को हाथ पकड़ कर कहीं ले जाया नहीं जा सकता ना, विचार की अपनी आंखें होती है। तो ताइमा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म जो है वो विचार करना सिखाता है। पहले विचार, फिर अनुभूत सत्य, और उसके बाद श्रद्धा। और विचार और अनुभूत सत्य के बाद जो श्रद्धा होती है वो परमानेंट होती है। इस जीवन में जीने के लिए दोनों यात्राएं हमें करनी पड़ती है, बाहर की यात्रा भी और भीतर की यात्रा भी। विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से हम बाहर की यात्रा में जीतते हैं, और धर्म और अध्यात्म के माध्यम से हम भीतर की यात्रा में जीतते हैं। और बाहर की यात्रा जीतने पर हमें सुख मिलता है, और भीतर की यात्रा जीतने पर हमें आनंद मिलता है। ताइमा का पूरा जीवन जो है इसी बात का संदेश है कि धर्म जो है वो वही होता है जो धारण किया जा सके। तो जो सत्य के पक्ष में है वो धर्म के पक्ष में है, जो प्रेम के पक्ष में है वो धर्म के पक्ष में है, और जो कर्म के पक्ष में है वो धर्म के पक्ष में है। धन्यवाद। ताइमा के चरणों में फिर से प्रणाम, और जैना को बहुत बहुत साधुवाद कि उसने इतने सारे अच्छे लोगों को सुनने का अवसर दिया। थैंक यू स्वप्निल जी, सो नाइस ऑफ यू। अब टाइम आ गया है, अब हम उनको सुनेंगे जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनके गुणों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वर्णन से परे है, अभिव्यक्ति से परे है। 2500 वर्षों के इतिहास में महावीर की अहिंसा को साधारण जनता तक ले जाने का जो प्रयास किया है वह अभूतपूर्व है। Traditionally, we all believe that Diksha is entirely for
self-realizations, and soul purification. Taima believes this too, but she also says that sadhana is incomplete without seva, and it's more relevant, especially in this era. It is said that हौसले जब भी बुलंद होते हैं, हौसले जब भी बुलंद होते हैं, चट्टाने भी मिट्टी का ढेर लगती है. Virayatan and its founder Taima have added a golden chapter in the history of Jainism. Her relentless and constant effort for universal welfare, even at age 86, cannot be described by words. I respectfully, with folded hands, invite Pujya Acharya Shri Taima. Please share your wisdom and Ashirvachan. सबसे पहले मैं जैना को अंतःकरण पूर्वक उस कमेटी के तमाम सदस्यों को धन्यवाद दे रही हूँ कि मुझे आपके सामने अपनी दो बात कहने का अवसर मिला है. सबसे पहले मैंने जो जाना है और जान करके जो जीने का मार्ग खोजा है वह तीर्थंकर महावीर से खोजा है. मुझे सौभाग्य मिला है अपने गुरुजनों की कृपा से उन प्राचीन धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने का. उसमें महावीर के जीवन को करुणा के अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं देखा. और बचपन से ही मुझे अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के ऐसे आशीर्वाद और संस्कार मिले हैं कि जो उनके द्वारा मेरे जीवन में सत्कर्म के प्रति और दया के प्रति सहज लगाव था. और मैंने फिर महावीर को देखा, तो महावीर भी वही. तो एक तरह से बचपन से लेकर के अब तक मुझे ऐसे लगा कि जीवन अगर जिया जा सकता है, आनंद पूर्वक जिया जा सकता है, तो उस करुणा के माध्यम से, उस प्रेम के माध्यम से, उस सद्भावना के माध्यम से ही जिया जा सकता है. अध्ययन करने के बाद में मैंने जब देखा कि आचार्य की जड़ता थी, तो उस आचार्य की जड़ता को मैंने महावीर को देखा कि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक जगह बैठ करके किसी गुफा में, किसी पहाड़ में, कहीं जंगल में जाकर के अपना जीवन नहीं गुजारा. उन्होंने साधना के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको जनता के बीच में बांटने की कोशिश की. संपूर्ण बिहार हमारे समक्ष है. कितनी ही अनेकों नदियां वहां पर बड़ी बड़ी बहती है. उन नदियों में ऐसे पैदल तो प्रवास हो नहीं सकता. नौका के द्वारा ही उन्होंने नदियां पार की. कभी राजगृह, कभी वैशाली, कभी चंपा, कभी वाणिज्य ग्राम, अनेक जगह पर वो विहार करते रहे. और विहार करके उन्होंने उन नदियों को पार करके जनता को, उस दुखी जनता को, जीवन के प्रश्नों में उलझे हुए उन जीवन को उन्होंने सही रास्ता दिखाने की कोशिश की. और जब मैंने देखा भगवान की भूमि, भगवान की जन्मभूमि, भगवान की साधना भूमि, भगवान के साथ वह एक निर्वाण भूमि, उस जगह पर जाकर के मैंने देखा कि वहां पे इस प्रकार के अपराध है, दुख है, बीमारियां हैं, अस्वस्थता है, और सबसे बड़ी बात लोगों के आंखों में आंसू है, जीवन रो रहा है. तो एक तरह से उस जीवन को और महावीर के समय के उस विहार को, तो उस तुलना करने के बाद में मुझे लगा कि महावीर की भूमि केवल हम उपदेश देते हैं, लेकिन आज उनकी भूमि में, तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बना से नहीं होगा. यहाँ पे जिलालय के साथ में विद्यालय भी चाहिए, यहाँ चिकित्सालय भी चाहिए, यहाँ की जनता के जीवन के हाथों में काम भी चाहिए. और इसी दृष्टि से मैंने काम किया. पर इस सब काम के पीछे मैं कहूंगी कि मुझे आश्चर्य होता है. उस समय भी समाज बहुत परंपरावादी था, रूढ़िवादी था, मान्यताओं से जकड़ा हुआ था. साध्वी अपने हाथों से किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दे, उसे हाथ पकड़ करके उसको खड़ा कर दे, उसके आंख में दवा डाल दे, उसके लिए उपयोग, उसके उपचार के लिए प्रयत्न करे, कि साध्वी के लिए शक्य न था. लेकिन मैंने हिम्मत की
कि अगर हम जिस सत्कर्म का उपदेश दे सकते हैं तो सत्कर्म को हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते हैं। तब इस प्रश्न का उत्तर जब मैंने खोजने की कोशिश की मुझे नहीं मिला, पर मैंने कहा कि महावीर की उस अहिंसा को जब उन्होंने जनता के बीच में जाकर के उनके दुखों को दूर किया तो मुझे भी वही रास्ता अपनाना चाहिए। और मैं ऐसे अलग भिन्न मार्ग हजारों वर्षों तक जिस बात को हम नहीं कर रहे थे, उस काम को करना जब मैंने प्रारंभ किया आसान नहीं था। यह परंपरावादी समाज ये कभी भी नई बात को न सुनने, न समझने, न स्वीकार करने की स्थिति में होता है। मुझे भी थोड़ा सा अलग जाकर के निर्णय करना पड़ा और फिर मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि समाज के सहयोग के कारण ही, समाज के अप्रतिम प्रेम पूर्ण हिम्मत पूर्वक अनेक लोगों, जैसे आज आपने खास करके अभय भैया जो विराटन के प्रेसिडेंट है, उनके पिताजी 40 वर्ष पूर्व तब से इस परिवार ने लगातार सहयोग के साथ में खड़े रहे और उन्होंने काम किया। और इसी तरह से उनके अनेक साथी, जिसकी प्रमोदा जी जिसकी चर्चा कर रही थी कलकत्ता में, नगीन भाई, और उसी तरह से उनके परिवार के लोग उस समय साथ में, थोड़े से लोग साथ में थे और थोड़े से लोगों के सहयोग से मैंने काम की शुरुआत की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, मैंने किसी का अनादर नहीं किया, मैंने किसी की आलोचना नहीं की। मैंने कभी भी, मेरा एक प्रेम का ही मार्ग रहा और उसके कारण मुझे समाज के अच्छे से अच्छे सहयोगी तो मिले ही मिले, लेकिन अपराधी लोग भी मेरे साथ में जुड़ गए, जो धर्म, पंथ, परंपरा और संप्रदाय से बिल्कुल दूर लोग थे। ऐसे लोगों ने भी मुझे साथ दिया। और आज अगर मैं कुछ कर पाई हूँ, कर सकी हूँ, तो मैं उन तमाम लोगों को अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद दे रही हूँ। और मैं प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि हजारों लोगों को एक तरह से जो मैंने काम किया उसमें मैंने कभी भी किसी की जाति का, किसी के धर्म का, किसी के पंथ का, किसी के मान्यता का कभी मैंने विरोध नहीं किया, ना कभी विरोध किया, ना किसी के धर्म परिवर्तन के लिए या गुरु के परिवर्तन के लिए या संप्रदाय के परिवर्तन के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी, इस 86 वर्ष की उम्र में, मैंने कहीं पर भी कोई ऐसा जिसको कि महावीर ने कभी नहीं कहा कि वो उसको छोड़ो, तुम्हें जो सत्य महसूस हो वो तुम करो। तो अहिंस शिक्षा के साथ, सेवा के साथ में संस्कार परिवर्तन करने की कोशिश जरूर मैंने की है। उन्हें शाकाहारी बनाने की कोशिश की है, उन्हें व्यसन मुक्त बनाने की कोशिश की है, अपराध से मुक्त जीवन जिया जा सकता है, इस तरह से रास्ता बताया है। लेकिन मैंने कभी किसी के धर्म परिवर्तन जैसा कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके मन में विराटन के विचारों के विषय में या महावीर के विचारों के विषय में कोई दूरी हो। और महावीर से मैंने पूछा, और जीवन के अंतिम समय, निर्वाण के पूर्व भगवान से पूछा, बंदे आप दुनिया को क्या संदेश दे करके जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो आश्चर्य होता है कि उन्होंने नहीं कहा कि तुम साधु बन जाओ, उन्होंने नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, उन्होंने नहीं कहा कि तुम भक्ति करो, उन्होंने नहीं कहा कि तुम पूजा करो, उन्होंने नहीं कहा कि संसार झूठा है, संसार छोड़ दो, बल्कि उन्होंने कहा कि बस मैं एक ही बात चाहता हूँ, संपूर्ण विश्व के साथ में मैत्री, भूये सुख पये, संपूर्ण विश्व के साथ मैत्री, यही एक संदेश है। और मैत्री बिना प्रेम के नहीं होगा। और अगर हम प्रेम और स्नेह में, वो आसक्ति में इतना ही अंतर है कि प्रेम
मुक्ति से हवा बहती है, वरना कहीं किसी प्रकार की कहीं रुकती नहीं है। चाहे वह किसी गली में से गुजर जाए, किसी बगीचे में से गुजर जाए, किसी जंगल में से गुजर जाए, किसी शहर में से गुजर जाए, वो गुजर जाती है। इसी प्रकार से जो प्रेम होता है वो कहीं रुकता नहीं है, न कभी धर्म पंथ जाति में रुकता नहीं है, वो सर्वत्र होता है। मुझे वही बात जो महावीर की बात थी वो मुझे अत्यंत एकदम जीवन के साथ, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं करती हूँ काम, मैं काम करती हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं बच्चों के साथ में, कि जिनके कपड़ों में गंदगी लगी हुई है, जिनके नाक में देखो, उनकी आंखों में देखो, उनकी गंदगी से भरे हुए शरीर देखो, मैंने उनको भी अपने साथ में लिया है, उनके साथ में भी बैठी हूँ, उन्हें भी खिलाया है, उन्हें भी सिखाने की कोशिश की है। और बूढ़े ऐसे जो लोग, वृद्ध लोग, उन्होंने भी मुझे ऐसे माँ की तरह मुझे अपने गोद में लिया है। तो मुझे कभी भी किसी से नफरत नहीं हुई। मुझे यद्यपि मैं स्वच्छता बराबर कोशिश करती हूँ कि स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ घृणा या नफरत की दृष्टि से मैंने लोगों को नहीं देखा। उस प्रभु की उस अहिंसा को, जो एक नहीं, मत करो मत करो मत करो, वो एक पहला पाठ था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे से हम कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बचपन में तो अहिंसा ठीक है, ऐसा झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, किसी को पिटो मत, किसी को मारो मत, वो ठीक है। लेकिन दूसरा जो चरण वो अनुकंपा का, कि तुम आसपास के लोगों की दुखों को भी अनुभव करो। और तीसरा चरण है संपूर्ण विश्व के साथ मैत्री। तो बस मैंने उस अहिंसा की, उस साधना की, ये जो एक प्रक्रिया है, एक क्रम है, उस क्रम को मैंने समझने की कोशिश की। पहले गलत काम छोड़, फिर दूसरों के सुख दुखों का अनुभव करो, सुखी देख करके प्रसन्न रहो, दुखी देख करके दुखी बन जाओ। और जो तीसरा चरण है, वह तीसरा चरण है सारे विश्व के साथ में मैत्री। बस इस विश्व मैत्री के द्वारा ही यूक्रेन जैसी दुनिया की अशांति को भी, मैं आज सुबह उठी तो मेरे आंख में आंसू थे, कि मुझे ऐसे लगा कि एक छोटी सी गर्मी आ जाती, मच्छर आ जाते हैं, वो एक तरह से एक अस्वस्थता पैदा कर देते। और उन लोगों के जो वो आराम से सो रहे होंगे, बच्चे औरतें सो रही होंगी, उनके मन में किसी के प्रति भी दुश्मनी नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में वो पता नहीं कब बम गिर जाएगा, कब हम खत्म हो जाएंगे, कब हमारा संसार नष्ट हो जाएगा, उनको अता पता नहीं है किस प्रकार से जीवन जीते रहे। प्रभु बस हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व मैत्री, विश्व शांति, विश्व कल्याण, और इसके लिए मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण बस उसके नाम के साथ ही, उसका हर सांस मेरे उसके नाम के साथ, उसके साथ काम के साथ व्यतीत हो। और इस काम के लिए एक संपूर्ण समाज के इस अहोभाव के साथ में, चाहे भी धर्म गुरु है, कितने प्रेम से उन्होंने मुझे नहीं देखा कि संप्रदाय के क्या, उन लोगों ने भी मुझे उतनी आत्मीयता से प्रेम किया है। मैं उन सब के प्रति अत्यंत आदर भावपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करके उनके आशीर्वाद की प्रार्थना और संपूर्ण समाज के सहयोग के साथ मैं एजुकेशन के काम को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी मेरा जो नया प्रोजेक्ट है, मेरा नया प्रोजेक्ट नहीं कह रही हूँ, हम सबका एक तरह से प्रोजेक्ट है कि जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय, जितने भी जिनालय हैं वहाँ पे विद्यालय किस प्रकार से हो सकता है। तो बेंगलोर में एक ऐसे प्रोजेक्ट के माध्यम से हिंदुस्तान भर के तमाम लोगों को शिक्षा प्राप्त कैसे हो, इसके लिए मुझे प्रयत्न करना है। कल बॉम्बे में बहुत बड़ी एक अच्छी योजना है कि मनुष्य आज इतना हिंसक क्यों हुआ है, जितना पशु हिंसक नहीं है, पक्षी हिंसक नहीं है, प्रकृति का कोई हिंसक नहीं है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य इतना क्रूर और हिंसक क्यों हुआ है, इस पर हमें रिसर्च करने की जरूरत है। केवल उपदेश देने से नहीं होगा कि क्रोध मत करो और अहंकार मत करो, कि क्यों होता है, और जब तक उसके ओरिजिनल कारण को हम नहीं खोज पाएंगे वो नहीं होगा। और इसी तरह से एक रिसर्च एजुकेशन सिस्टम इन बॉम्बे में, और इसी तरह से तीसरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नेपाल में, कि जहाँ पे जैन धर्म आचार्य भद्र बाहु के प्रति मेरी बहुत बहुत श्रद्धा है, कि आचार्य भद्र बाहु ने एक मार्ग बदल दिया था।
एक मार्ग बदल दिया था। महावीर ने मना किया था कि ऐसा मत करो, मत लिखो, लिख नहीं सकते हो, लिखने से हिंसा होती है, पर उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि जब तक हम लिखेंगे नहीं, महावीर को हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो आचार्य भद्र बाहु के प्रति मेरी अत्यंत अगाध श्रद्धा है। मैं बाहुबली के भद्र बाहु के नाम से ही वहां पे नेपाल में भी एक इसी प्रकार से एजुकेशन का प्रोजेक्ट शुरू करवाना चाहती हूँ। नेपाल में भी अपना एक बहुत बड़ा काम है और इसी तरह से कच्छ में समूह शरण तीर्थंकर महावीर को हम साक्षात अनुभव कर सकेंगे, महावीर के उपदेश को हम अनुभव कर सकेंगे, महावीर के समय की उस परिस्थिति में हम उपस्थित होकर अपने आप को उनकी आत्मीयता और उनका आशीर्वाद महसूस कर सके। इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट समूषण का है। हमें यही तो रुकना नहीं है, जीवन की यात्रा अखंड इसी प्रकार से निर्बाध होती चलती रहे। इसके लिए आप सबके लिए सहयोग की प्रार्थना करके मैं अपनी बात को मैं पता नहीं मैं बोलती हूँ। मंगल पाठ और मंगल पाठ के पहले योगेश जी, सच में कहा जाए तो जो भारतीय संस्कृति में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आचार्य श्री जी आपको मंगलाचरण के लिए हम विनंती करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उच्चायानम, नमो लोये सव्वसाहूनम, एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम, विश्वव्यापितमो खिनस्थितर्णे बालोपिकल्पांकुरो दारिद्राणि गजावलिं हरिशिशु काष्ठानि पत्नी कणा पीयूषशरभूपि रोगनिवहं यद्वत् तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्ति मति सतीत्र जगति कष्टानि हर्तुं क्षमा गिर्वानद्मधेनु कुम्भमणयस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवा दानव मानवा सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन लक्ष्मीस्तस्य वशा वशे बहुविना ब्रह्मांड संस्थानिनी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मनीषं संस्तोति योध्यायति चत्वारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितमो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितमो लोकोत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग, उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। मैं बोलूंगी और उसके साथ साथ आप सब बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, अब्धिर्लब्धि कदम्बकस्य तिरुकु निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधनी गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरु भक्तिशाली मनसां मौलिस्तपश्येजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठ समय श्री गौतम स्थानवदे, श्री गौतम स्थानवदे। गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य समृद्धि सुयश प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, पुण्य तीर्थ क्षेत्र का। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य चंदा जी महाराज की, गौतम स्वामी की जय। सकल श्री संघ की जय, भगवान की जय, सकल संघ की आप सबकी जय। आचार्य आपके उपकार का कैसे चुकाए मोल, लाख कीमती धन वाला आचार्य हमारे अनमोल। मतेन वंदामी ताइमा, मतेन। जस्ट लास्ट मिनट हमारे प्रोग्राम की एक जो फॉर्मेलिटीज है, टू कंक्लूड द
conclude the whole program and the session, I would like to share one of the slide here that I prepare for the team that who is working behind, and would like to give the thanks to everyone. So thanks to all the participants, viewers from all over the globe. I think, am I sharing? Okay. Yes, And thanks to all invited dignitaries and Sadharmic speakers. Thanks to Acharya Shri Ji, Sadhvi Jis, and everyone. Thanks to JAINA leadership. Thanks to Virayatan Parivar. Thanks to Mr. Dhiman Bhai Bora. Thanks to Mr. Jai Jain. Thanks to our coordination team, Shri Harish Shah, JAINA President, Shri Dilip Bhai Shah, Shri Mahesh Bhai Wadhar, Shri Jai Jain, Shri Dhiman Bhai Bora, Shri Vipin Doshi. डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई, प्रेम भाई, जिनेश भाई मेहता, पुनीता बेन शाह, मुकेश तुराकिया जी, कनक भाई गोलिया, आप सभी को के इस कोऑर्डिनेशन से इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत आप सबकी अनुमोदना है. वंस अगेन थैंक्स टू डॉक्टर विपिन दोशी, इतना शॉर्ट टाइम में आपने इतने अच्छे से गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बिग थैंक्स टू एवरीवन. Thank you. Thank you. Now, I think we can conclude the session. Great. Thanks to Yogesh Bhai too. Yeah, thanks. We'll conclude the program. आप सभी के लिए अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद कि आपने इतना श्रम करके जिस तरह से आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है. मुझे ऐसे लगता है कि जैना का आदर्श लेना पड़ेगा समाज को, और जैना ने जिस तरह से पूरे समाज को संगठित करके एक दिशा में ले चलने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये सारे देशवासियों के लिए, सभी जगह जैनों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन आपने दे दिया है. Thank you. जैना की कमाल है. We conclude the program over here. Thank you very much to everyone. Lastly, I would like to play the last video of that award ceremony again. So, okay, please. I would like to highlight Rambhai Gada, our award president. Yes, sure. Air spotlight and the award. Okay. And now I'm playing that video. Just a second. You're going to start from the where we are. Yep, I'm going to share. Just a second. Yeah, but are you going to start from the beginning or from toward the end? No, just an award ceremony. The video of the award giving. Oh yes. Sorry. Yeah, thank you. Yes, many people couldn't see in the beginning. Yes, absolutely. Yes, so I would like to share that on behalf of Rambhai. Koti one now. I see. Yes, Rambhai, I'm sharing the award video. Thank you. Thank you very much. We conclude the session over here. Thank you very much. Thank you, everybody. ताई को कोटि कोटि वंदन. में वंदनामी साहिब.